Okay, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So my name is Muhammad Faisal, and today's session is very interesting. I'm calling him a prodigy because of many reasons. And I have my student with me, Abdul Rafi. Uh, this session is going to be in Urdu and English both, uh, in Hindi as well. I mean, Urdu, Hindi is similar. We will be taking out some of the clips from this session so that we can run them separately as well. Okay, this is a completely open podcast. So मैं तुमसे अब्दुल राफे कुछ सवालात करूंगा. You have to answer me and provide me basically an explanation. ठीक है? What have you done? So who you are, how you came to know about us, so on and so forth, right? So ये सब चीजें तुमने मुझे बतानी है. But at the same time, तुमने ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में करना है because you can do that, right? Because you can speak both the languages. So सबसे पहले first off मुझे उर्दू में बताओ अब्दुल राफे कौन है भाई? Who is अब्दुल राफे? अस्सलाम वालेकुम. मैं हूँ अब्दुल राफे और अब्दुल राफे 19 साल का है, लड़का है और उसको बहुत चीज़ों का शौक़ है, लेकिन करियर वाइज उसको साइबर सिक्योरिटी में शौक़ है. और अभी 1 महीने पहले CISSP एग्ज़ाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पास हुआ हूँ. सिर्फ अल्लाह की वजह से. मैंने बहुत कम काम किया है और माँ बाप की दुआ से, टीचर्स की दुआ से, आपकी दुआ से. और जी बस अभी तक तो शॉर्ट रखेंगे इंट्रो. Good, mashallah. Do you know Abdul Rafe, at the age of 19, you are the first person in Canada, because I can't find any records. मुझे कहीं और records नजर नहीं आ रहे. You are the first person in Canada. तुम पहले आदमी हो कनाडा में. और बड़ी खुशी के साथ मैं कह रहा हूँ कि एक मुसलमान हूँ माशाल्लाह कि you passed your CISSP exam, right? Chief, which is known as Certified Information System Security Professional. Now, passing the exam is one thing, and then getting the certification is another thing, which is a completely different topic, because तुम्हें 3-4 साल का एक्सपीरियंस दिखाना होगा सब कुछ इससे पहले कि तुम फुल सर्टिफिकेशन हासिल कर सको. लेकिन जो तुमने काम कर लिया है उसकी वजह से तुम्हारे लिए जो जॉब के दरवाजे हैं ना, इंटरव्यू के दरवाजे तुम्हारे खुल गए. द ओनली कैवियाट इज कि जब तुम इंटरव्यू पे जाओगे तो वहां पर तुमको वो लोग जो है ना तुमसे पूछेंगे, दे गोइंग टू आस्क यू कि भाई तुमने CISSP तो कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बट तुम्हें काम क्या आता है. तो तुमने व्हाट वर यू स्टडीइंग विद अस, व्हाट आर यू स्टडीइंग राइट नाउ, एंड व्हाट हैव यू स्टडीड सो फार? Right now I'm studying AIOps. I'm studying AIOps with Al-Nafi. And I started off with the CAP program, the Career Advancement Track. It had CODS, Career, Cybersecurity, Offensive, Data Science, SCADA, and Linux. It had other things as well, IELTS and communication class as well. That's where I started. But I didn't know my route. I was studying DevOps, SysOps, Linux, Python. I was dipping my feet everywhere, as they say. But then 7 months ago, I started my CSP journey to properly start studying for the exam. And alhamdulillah, a month ago, it happened, alhamdulillah. And okay, yes. माशाल्लाह, that's good. So the fact कि तुमने CISSP का एग्जाम पास किया है, that speaks a lot. तुमने सबसे पहले हमारे पास आए, तुमने कैट पढ़ना शुरू किया. यू स्टार्टेड विद कैट, कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक, फिर उसका नाम डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी हो गया, एंड देन अब तुम उसका AI ऑप्स पढ़ रहे हो जिसमें डेवऑप्स सिस्टम्स AI है. मुझे ये बताओ कि कनाडा में तुमने क्या पढ़ा है? व्हाट हैव यू स्टडीड फ्रॉम कनाडा? कनाडा से क्या किया तुमने? जी, कनाडा जब मैं आया था, मैं ग्रेड 8 में आया था. फिर ग्रेड 8 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, हाई स्कूल की ग्रेजुएशन की मेडोवेल सेकेंडरी स्कूल से. हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू केम टू कनाडा? कितने साल के थे? 13. Just turned 13. 13. Yes. 13, okay, mashallah. My So son is 10. 13, mashallah. Okay, go ahead. yeah. And then I got into Ryerson in a business program. And I did 1 semester there. And to be honest, it wasn't for me. At the age of 15, I knew I could do more than just the conventional path that everybody took. And I already heard from my family, friends, and my older friends that this is not the path for you. So alhamdulillah, I got guided to Al-Nafi's platform. And yeah, the rest is history.
Mashallah. So you have been in Canada for 7 years now, right? 6, I think. Yes. 6 years. 6 years तुम यहाँ पर हो. You came when you जब तुम 13 साल के थे और तुमने उस टाइम पे सारा ये पढ़ा सब कुछ किया. Do you know इस वक्त कनाडा में और यूएस में कंबाइन a million cyber security jobs खाली हैं. In cloud, in DevOps, in SysOps, in AI. Generative AI is another thing जो मैंने तुमको दिखाया था, right? Uh, at the age of this age जो तुमने पास किया, you have even, I mean, मेरा कोई record तो नहीं था. I was the first one in my family, and I believe from Pakistan as well when I did my CISSP certification back in UK. And I was the first to become the examiner, but I did score the highest marks in the whole of Europe. That was a separate thing. But you, mashallah, broke all the records. तुमने सारे records तोड़ दिए कि तुमने 19 साल की उम्र में अल्लाह ने तुमसे करवा लिया. That's a great achievement, right? That's mashallah great achievement. Now, again, yes, you're right कि यहाँ पर जो universities हैं, they still tend to focus on the old stuff. तो अभी तक पुरानी चीजें पढ़ा रहे हैं, पुरानी चीजें करवा रहे हैं. And the reason is कि the trainers जो वहाँ पर teachers हैं, तुमने कभी जब तुम रायसन में जाते थे, रायसन इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स जिसको समझा जाता है यहाँ पर, राइट? राइट, Yes. रायसन हो गया और सब जो हो गए. बट यहाँ पर तुम्हें कोई ऐसा ट्रेनर मिला, कोई ऐसे टीचर मिला कि जो इंडस्ट्री में काम करता हो? मुझे कोई नहीं मिला जो जॉब स्पेसिफिक आपको ट्रेनिंग दे. You were the first one. Alnafi was the हाँ, first बिकॉज वो खुद जॉब, उनकी जो जॉब है, प्राइमरी जॉब, वो टीचिंग है खाली यूनिवर्सिटी में ना. उनको कोई अंदाजा नहीं है कि यूनिवर्सिटी दुनिया में क्या हो रहा है. आई मीन वर्क स्पेस में क्या होता है, वर्क प्लेस में क्या होता है. दैट्स अनदर थिंग. तो इसलिए तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा एज था. यूनिवर्सिटीज कनाडा हो, यूएसए हो, यूके हो, जर्मनी हो, कहीं पर भी हो, ये जॉब मार्केट है, ये यूनिवर्सिटीज हैं. यूनिवर्सिटीज इंस्टेड कि तुम्हें जाके जॉब मार्केट में बिठाएं, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, वो तुम्हें यहीं पर ही छोड़ देते हैं. एंड देन इट टेक मेनी ईयर्स फॉर पीपल टू फिगर आउट कि हमें यहाँ से वहां तक कैसे चल के जाना चाहिए, राइट? तो तुमने एक बहुत बड़ा वो मसला तो हल कर दिया अल्लाह ताला ने तुम्हारा कि भाई यू वर एबल टू जंप इन, राइट? नाउ CISSP in itself is equivalent to RQF level 7 qualification. Do you know this? You told me that, right? Yes. You asked me that question. I still remember कि जब तुमने मुझे कॉल किया था, it was 4 a.m., right? सुबह के 4 बज रहे थे, मैं काम कर रहा था. मैंने कहा इस टाइम पे काम करना. And you called me and I was surprised कि तुम जाग रहे हो, right? CSSP की जो क्वालिफिकेशन है, it is classified as RQF level 7, means that earning the CSSP is considered an educational achievement that is the same level needed to achieve a master's degree, right? So essentially by just passing the CSSP exam, you are equivalent to, according to UK NARIC, this is UK NARIC, right? UK NARIC ने इनकी पूरी कंपेरेबिलिटी के निकाला है. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, Q1 अगर मैं लिखूं, दिस इज, ये क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है जो दुनिया में तमाम यूनिवर्सिटीज और सब लोग उसको फॉलो करते हैं, और हमारी तमाम क्वालिफिकेशंस इसके मुताबिक हम वो करते हैं. तो RQF level 7 means a master's degree actually, right? Which is QAA हो या यानी कि जो वेल्स का नॉर्दर्न आयरलैंड का फ्रेमवर्क है, या ये है, या इवन कि अगर EQ, अगर यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क EQF के हिसाब से देखा जाए, तो उसमें भी आपका बेसिकली यही तरीकेकार है. इट्स द सेम थिंग, राइट? इट्स द सेम थिंग कि जिसमें आपको लेवल 7 जो है, इट्स इक्वल टू अ मास्टर्स प्रोग्राम, राइट? तो दैट इज लाइक अ बिग ह्यूज अचीवमेंट फॉर यू. बट व्हाट दिस मीन्स इज के तुम, यानी कि देखो ना, ये होता है ना, मास्टर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, राइट? व्हाट दिस मीन्स कि अगर तुमने अपने एक्सपीरियंस दिखा दिया, और यहाँ पर हमारे पास जो डिप्लोमा है RQF का, उसमें तुम एक्सपीरियंस काउंट कर सकोगे, बिकॉज यू आर डूइंग AIOps RQF level 6. You've already passed level 7 exam, right? And you're doing RQF level 6 which is AIOps, but उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा रही है ना. तो बाय वर्च्यू ऑफ वो सारी चीजें लर्न करने के, तुम्हें ऑलरेडी एक क्वालिफिकेशन जो मिलती है बैचलर्स की, तो यू विल हैव बैचलर्स एंड यू ऑलरेडी हैव अ मास्टर्स, राइट? राइट, बट द प्रॉब्लम इज के उसको पूरा सर्टिफिकेट लेने के लिए
तुम्हें एक्सपीरियंस दिखाना है, लेकिन RQF लेवल 5 लेवल 6 तुम दिखाकर उसका एग्जाम पास करके यू कैन इजिली गो देयर, राइट? तुम उसमें जा सकते हो। एक और जो तुम्हें सबसे बड़ा एडवांटेज होगा वो ये होगा कि तुम्हारे ना जो यहाँ पर एक्सपीरियंस है 7 मंथ्स में जो तुम किया और अभी तुम पढ़ रहे हो तो 1 साल के अंदर अंदर खत्म करते हो, तो दैट्स ऑलमोस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, राइट? तो वो तुम दिखाकर और जब तुम्हारी जॉब हो जाती है वो दिखाकर यू कैन you can apply for this full CISSP certification, I would say, hopefully in the next 1.5 year. Really? Yes, I I mean, was expecting because, 4 years minimum. well, you need 4 years, but Yeah. because of the bachelor's degree, you can apply for 2 years. I think there's an equivalency जो आपको निकालते हैं ना. So by virtue of passing your level 6, you will be able to apply for 2 years. वहां से ले सकते हो, ठीक है ना? There is a उसका पूरा तरीकेकार होता है. And then जो तुम्हारी इंटर्नशिप चल रही है, that is also classified as a work experience, right? So तुम वहां से ले सकते हो 1.5 साल 2 साल, तो तुम 1.5 साल में 1.5 years में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, Inshallah. इंशाल्लाह. बट एज आई सेड कि व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यूज, इंटरव्यू में तुमसे पूछेंगे तुम्हें लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन आती है, यस. तुम्हें पाइथन पे काम आता है, यस. तुम्हें ऑटोमेशन पे काम आता है, यस. तुम्हें CI/CD के ऊपर काम आता है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, ठीक है ना? और इसके अलावा तुम्हें साइबर सिक्योरिटी पे, GRC पे, जो वो तो तुम्हें सारा जाहिर सी बात है सब आता है. आई एम डेवलपिंग योर रेज्यूमे, आई एम वेरी हैप्पी कि पहला रेज्यूमे है जिसमें 19 ईयर्स के जो है ना मेरे स्टूडेंट ने पास किया है. नाउ व्हेन आई वाज इन UK, मेरे पास एक स्टूडेंट था, कॉकेशियन स्टूडेंट था, एंड ही पास हिज एग्जाम विद द हाईएस्ट नंबर इन UK, लाइक, राइट? सो मैंने यूरोप में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर उठाए थे, उसने UK में, पूरे UK में उठाए. एंड ही वाज वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करता. ही वाज वेरी हैप्पी long ago. This I'm talking about 2005 to 2006 2007, right? Hmm. That's the time frame कि जब वो मेरे पास पढ़ने आया, सब कुछ किया, and we delivered the training. At that time we charged, I believe, 2,000 pounds, ठीक है, for the training. अब हमारी RQF की पूरी क्वालिफिकेशन, that was just a CISSP course, nothing else, सिर्फ CISSP कोर्स था. अब हमारे पास तो पूरी डिग्री है जिसकी इतनी फीस है, राइट? तो Yeah. एज आई सेड कि जिसमें तुम ये काम करते हो सब कुछ अच्छी तरीके से, तो तुम्हें बहुत बड़ा फायदा है. नाउ UK में, कनाडा में बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, एज यू नो, राइट? हर साल ऑलमोस्ट मिलियन बंदा लैंड करता है रफली, राइट? स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स सब मिला मिलू के, राइट? हर साल ऑलमोस्ट 500,000 लोग PR पे आते हैं, राइट? There are lots of jobs in Canada, right? In cybersecurity, in GRC, in cloud, in data science, but everything requires you to have hands-on experience, right? Hands-on. तो वो जो तुम्हारे CV है उसमें जो चीजें लिखी हुई कि तुम्हें vulnerability assessments आती है, तुम्हें network penetration testing आती है, application pen testing आती है, you have done all of those things, right? So वो सारा तुमने खत्म करके तुम्हें Linux administration आती है. जब तुम वो सब दिखाओगे, तुम्हें Bash, Python, automation सब पे काम आता है, बिकॉज तुमने कैट लिया था, फिर तुमने डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है ना सारी चीजें यूनिफाइड कोर्स में हम लोग दे रहे हैं, ठीक है ना? अब तुम AIOps पढ़ रहे हो, तो वो सारी चीजें जब तुम दिखाते हो, यू विल बी इन अ वेरी स्वीट स्पॉट टू अप्लाई फॉर जॉब्स एंड बी हायर्ड वेरी वेरी फास्ट, राइट? द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी कि तुम्हें सैलरी कितनी डिमांड करनी है. सो इफ यू आर 19 ईयर्स ऑफ एज और तुमने CISSP पास कर लिया, आई वुडंट बी सरप्राइज कि तुम 19 ईयर्स ऑफ एज में तुम्हें 75 to $80,000 की जॉब मिल जाए per annum. I mean, at the age of 19, that is a great achievement. So, अगर तुम इसी कंसिस्टेंसी के साथ इसी तरह मेहनत करते रहे और तुमने मेरी जिस तरह मैं जो बात कर रहा हूँ तुम करते रहे, who knows के जो है ना तुम एक ऐसे entrepreneur बन जाओ इस इंडस्ट्री के अंदर that you leave everyone behind, right? But that requires a lot of determination and lot of discipline, because discipline होगा तो तुम बहुत तेजी के साथ काम कर सकोगे, राइट? मुझे तुम्हारा रूम देख के अच्छा लग रहा है कि इट्स क्लीन, राइट? राइट. मैं अपने मेरा बच्चा जो है उसने अभी स्कूल जाना शुरू किया है, राइट? तो अब वो स्कूल जा रहा है माशाल्लाह. वी डिड होम स्कूलिंग अल्हम्दुलिल्लाह.
to a long time, and then now mashallah he started going for school. So उसके बावजूद भी हम उसको अलग से पढ़ाते भी हैं. तो स्कूल में मैं हाई स्कूल के बच्चों को देख रहा था. You know, Nugget School is one of the classified as the best school here. I was not impressed a lot, ठीक है. बट मैं वहाँ गया, मैंने देखा वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं इमिग्रेंट्स के, ठीक है ना, यहीं के नेशनल्स के, मुसलमानों के, राइट. व्हाट आई हैव सीन इज के दे आर डायरेक्शनलेस. व्हाट आई हैव सीन इज के उनको कुछ नहीं पता. दे आर जस्ट सिटिंग देयर इन द डॉर्म्स, वहाँ बैठे हुए हैं, और वो जो है ना बैठ कर सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं. आई मीन दे आर नॉट ड्रिवन. सो द फैक्ट कि तुम 19 साल के हो और तुम्हारे चेहरे के ऊपर जो है ना मुझे सीरियसनेस नजर आ रही है, दैट्स अ गुड साइन. देयर इज अ हदीस, अक्सरुम बिज़िक्र हाज़िरुम बिल्लज़्ज़ात. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, mention death frequently because it is a destroyer of pleasure, right? Aktharum bizikr hadrum bil lazzat, right? Because it is a destroyer of pleasure, because that brings seriousness on your face, right? So the reason we should remember death is because कि हमें पता हो कि भाई we are here for a purpose, and हमारा purpose क्या है? That we are successful in this world and hereafter, right? So I'm very proud, mashallah, to see that thing. So don't take it down. तुम हिफ्ज भी कर रहे हो ना, you're doing हिफ्ज as well, right? जी. So तुम्हें चाहिए कि तुम ना कम्युनिटी में जाओ और जितनी भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं इमिग्रेंट्स के, मुस्लिम्स के, नॉन मुस्लिम्स के, वहाँ जाओ and just tell them your journey. I'm going to arrange few things for you here ताकि तुम्हें ना प्लेटफॉर्म मिले कि जिसपे तुम खड़े हो सको, राइट. लोगों ने उल्टे सीधे प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं टाइम ज़ाय करने के, ठीक है ना, यूट्यूब के ऊपर. और यूट्यूब इज एन एंटरटेनमेंट चैनल, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए. इट्स नॉट फॉर लर्निंग, इट्स नॉट फॉर डूइंग एनीथिंग, इट्स जस्ट फॉर वेस्टिंग टाइम, अनफॉर्चुनेटली, राइट. बट पीपल आर डूइंग दैट. लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम्हें एक प्लेटफॉर्म मिले कि जिसमें तुम बात करो. एंड वन ऑफ द थिंग्स आई वुड सजेस्ट यू इज के ट्राई टू गो टू डिफरेंट मॉस्क्स एंड डिफरेंट कम्युनिटी सेंटर्स, ठीक है, और वहां जाके बताओ सबको योर स्टोरी, ठीक है ना. बिकॉज इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल बी एम्प्लॉयड, इंशाल्लाह, राइट. बिकॉज नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ जॉब नाउ, बिकॉज तुमने ना सिर्फ तुम्हारे पास स्किल्स हैं बल्कि अब तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन भी है, राइट. सो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टेंट पॉइंट फॉर यू कि जिसमें तुम जल्दी जाकर बैठ सकते हो ना मार्केट में, राइट. सो तुमने पूरी कोशिश करनी है कि तुम जो है ना बेसिकली हाईलाइट करो कि भाई डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है ना. बिकॉज 7 months टाइम इज बेसिकली इट टुक मी at least 11-12 months to prepare for my exams, right. In life मैं किसी एग्जाम में फेल नहीं हुआ, but there was one exam I failed 3 times, and that was CISA, Certified Information System Auditor. Yes, I have failed 3 times, and every time I was failing, and I was failing by 0.5%, right. So every 6 months I was preparing, and every 6 months my exams के लिए जा रहा था, and I was failing the exam, and I was like, what is happening, right. And I was sitting in the masjid, and मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला, I don't know what is happening, क्या हो रहा है अल्लाह ताला, and help me with this, because ना it is very demotivating because जब इंसान fail होता है. But because of that failure, Allah was keeping something better for me. So on my 4th attempt, ठीक है ना, I passed the CISA exam, right, on the 4th attempt. But after 1 month, I basically, और मैंने जो ना सीसा की CISSP की इतनी तैयारी नहीं की थी, बिकॉज मैंने 1 month पढ़ा खाली, बिकॉज मैं सीसा की तैयारी कर रहा था, राइट. और फिर जैसे ही मैं नेक्स्ट मंथ पे गया, सो आई वेंट फॉर SSCP फर्स्ट, द सिस्टम सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर, विच इज अ स्मॉलर एग्जाम. आई पास दैट, एंड देन it was in June I passed CISA, in July I passed SSCP, in August I passed my CISSP, back to back in 3 months. And in September I was sitting on a job of 40,000 pounds British per annum. In those days, That's over big. 2 decades ago,
40,000 पाउंड सालाना was a good salary. I mean, I was like, अभी बच्चों की इतनी सैलरी लगती, right? अभी जो बच्चा लड़का उस्मान जो गया है जर्मनी जी में, that is what he's earning. ठीक है ना? So मेरे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आए, बांग्लादेशी, नेपाली, over the years मैं हर जगह पढ़ाता आ रहा हूँ. I'm really proud, mashallah, कि you did this, right? जी So, but you should not, you should take this as an opportunity to keep on moving further, right? Because तुमने एक बड़ा segment, I still remember कि तुम्हारे parents ने मुझे कहा था कि भाई हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई छोड़ रहा है, what is he doing, ये क्या कर रहा है, what have you done, etc etc. और फिर मैंने तुम्हें कहा कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, ये कर लेगा, आप इंशाल्लाह फिक्र नहीं करें. So I created a group, and your father contacted me a couple of times. Didn't have the time to listen to his messages. I don't know what he was saying. I have to go back and check his messages. You have to give me his number because itne sare messages hain, right? But I'm very happy that you proved everyone wrong. alhamdulillah. And alhamdulillah, Allah give you the tawfiq. You know, tawfiq is given by Allah, by none Only other than Allah. In my life, I've seen Muslims, non-Muslims, Christians, Hindus, Jews. I have students all over the world, right? Being successful. And when they get the success, they always come back and say, thank you, Jazakallah, or, like we were successful because of your help or whatever the case is. But I always tell them that this all comes down to Allah, not to me, right? So I'm happy, mashallah, that you did this. Now, but now is not the time to celebrate anything. Celebrate on the day, by giving sadaqah more and more, that कि भाई मैंने job पकड़ ली. That is your celebration time, right? Because you already paid around $700 for the CISSP exam, something like that, right? yeah ठीक है ना? So that's a good fee. Back in my days, it was $500 or something, right? ठीक है? तो अभी $700 फीस तुमने जमा कराई, सब कुछ किया, ठीक है? That's fine. But अभी तुम्हें काम करना है. So don't let your guard down. In the next 3 months, if you study what you're doing right now, DevOps, SysOps, AI, अगर तुमने DevOps के रोजाना कोर्सेज पढ़ लिए, SysOps के पढ़ लिए, you're doing HIFZ as well, right? HIFZ भी कर रहे हो ना अपना? 6 सिपारे कर लिए ना तुमने? कौन जी कौन से? पीछे से अच्छा 30 पीछे. 29 28 yeah So 25 तक, 26 तक तुमने कर लिया, right? yeah ठीक है? That's good, माशाल्लाह. So तुमने पूरी कोशिश करनी है. What is your recitation method? Have they told from you something? Iraq, the original one. Okay. Where are you going? कहाँ जा रहे हो? I'm going to What is the name of the I place? know कहाँ this is पर the पढ़? hadith. Oh, I thought you were talking about the hadith that Rasulullah said. I No, thought no, you were no. quizzing me on that. No, Okay. no, no. No, I do it online. Online कर रहे हो. Okay, that's good. Doing it online. So teacher कहाँ से Yeah. है तुम्हारा? Pakistan. Change the teacher. Really? Yes. Okay. There is a teacher. I mean, पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे जो कुर्रा हज़रात हैं ना, they recite Quran as if they're reading Urdu, right? There was a saying, even though Quran came, the nazul of the Quran, जो Quran नाजिल हुआ, मक्का और मदीने में नाजिल हुआ, मगर जो Yeah. उसको ब्यूटिफिकेशन से पढ़ा जाता है, it's in Masr, right? That's Egypt. So the Masri Qari हैं, they have the most beautiful voice. And पाकिस्तान में किसी को भी एक रिवायत से आगे किसी को नहीं पता, शायद मैक्सिमम 2. There are 20 riwayas, there are 20 methodologies of reading Quran, right? And there are 10 sahabas. From each sahabi, there are 2 riwayas, and then that's how we get 20, right? So in Masr, they recite in all methodologies, right? So it's very beautiful, mashallah, right? So do that. Absolutely, yes. But these are certain advices I'm going to give it to you, right? मैं तुम्हें कुछ advices दे रहा हूँ. Take it if you want, leave it, it's up to you, right? So study DevOps, SysOps, AI. I'm going to ask you to, yes, suggest. I can't force you. I would suggest you to change your teacher. Get something like like a qari from Masar or something. I can arrange one for you, right? The teacher who's teaching me, making me an alim, a scholar, he's a qari of 20 qiraat. Wow, mashallah. And he's a student of Manshawi and Al-Husari, right? So he's an old man.
but Manshavi and Manshavi and Yes. Husari, right? So these were the original reciters. जो दुनिया में सब उनको फॉलो करते हैं, right? Even from the Makkah and Medina, like everyone, they used to, all the जो पुराने उस्ताद हैं सारे वो उनके पास उनसे पढ़ के आए. Mm. So he's one of them. He's also a student of Sheikh Yusuf al-Qardawi, just like me, but he's an old person, but was zabardast. And he's a Sheikh al-Hadith and Sheikh al-Quran, right? So he's a full scholar and a reciter of all the 20 different styles, right? MashaAllah. Mashallah. Anyway, so that's one thing. But DevOps, SysOps, AI, your resume will be developed. It is being developed right now. I'm personally taking it. All the other resumes अब लोगों के पास जाते हैं. But Yeah. there are only handful of resumes जो मेरे पास हैं. तो मैं इसमें तुम्हारा बना रहा हूँ. And मैं तुम्हें Deloitte में और PwC में सब जगह recommend करूँगा. I'm going to recommend you to all the places. There will be some good opportunities for you, inshallah. But my recommendation to you is that you are young, you're energetic. Try to secure a job which is remote. Don't work at consulting companies, because consulting companies sometimes they chew you up, right? They just squeeze every life essence out of you, right? But isn't that how you learn? Well, yes and no, because it brings a lot of frustration in you, and you get to learn things which are really bad in many ways, right? One of them is like ego, takabbur, you believe that you are the best in the game, and many other wrong things, because they cultivate that culture in you, right? On the contrary, if you don't have a strong support system to stay away from those things, it's very difficult, right? Alhamdulillah, I was not influenced, but people around me, I've seen them changing very fast, right? But this is my recommendation to you. But yes, in today's world, even consulting business is dying out because everyone is going towards generative AI, Yeah. right? So generative AI जो है वो बहुत सारी चीजों को खत्म कर देगा, because you don't need a consultant, you have AI, right? So AI is going to be the death of many businesses. So organizations जो हैं वो इस पे काम कर रही हैं already, right? So तुम्हारे पास अब बहुत अच्छा मौका है कि तुम अगर उसको कल्टीवेट करते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो बहुत अच्छे तरीके से उसको आगे लेके जा सकते हो, राइट? सो मैं चाहता हूं कि तुम क्यूबरनेटिस के एक एग्जाम मिनिमम, टेराफॉर्म दूसरा, अगर तुम ये निकाल लेते हो, तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं मतलब कि जॉब्स मार्केट में अभी कैसी चल रही हैं, क्या चल रही हैं, ठीक है? सो आई कैन शो यू सम थिंग्स. मैं तुम्हें इसमें दिखा देता हूँ. दिस इज द ऑफिशियल ब्लॉग ऑफ वो, ठीक है? मैं लिखूँ इंडीड ग्लोबल, राइट? ठीक है? एंड इफ आई गो टू इंडीड ग्लोबल वर्ल्ड वाइड, एंड तुम यहाँ से बैठ के काम कर रहे हो, सही है? तुम यूनाइटेड स्टेट्स में भी अप्लाई कर सकते हो और तुम कनाडा में भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज यूर इन कनाडा बोथ एट द सेम टाइम, ठीक है? सो जस्ट टाइप इन क्लाउड और तुम्हें 7,000 जॉब्स कनाडा में नजर आ रही हैं. और अगर यही काम तुम अगर यूएस में लिखते हो, जस्ट टाइप इन क्लाउड, तो तुम्हें 87. 87,000, right? So this, so it's a huge difference. It's more Yeah. than 10 times. It's 11 times, 12 times, right? You can see कि कितना difference है. Now इसमें जो jobs हैं जो तुम्हारे लिए हैं, अगर मैं उसमें करूँ, right? And if I go to LinkedIn, क्योंकि LinkedIn में तुम्हें अपने प्रोफाइल को अच्छा बनाना पड़ेगा. as soon as कि जैसे ही तुम्हें वो मिल जाए ना, तुम्हें अपना CV अच्छा सा बनाना पड़ेगा. So just type in cloud here, right? और तुम लिखो इसमें जो ना USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है? तो तुम्हें नजर आएंगी 150,000 जॉब्स, राइट? ठीक है? इसमें जो जॉब्स जो तुम्हारे एक्सपीरियंस लेवल के लिए हैं वो Yeah. एंट्री लेवल है, एसोसिएट है, इंटर्नशिप है, राइट? सो आउट Yeah. ऑफ 150, ऑलमोस्ट 54. 54,000 पे तुम जाके बैठते हो, राइट? तो ये तुम्हारी पोजीशंस हैं जिसमें तुम जा सकते हो. सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इंटर्न, मैंने कहा ना तुमसे बिग फोर में तुम्हें मिल सकती है. एंड दिस इज व्हाट दे पे, $36, $35 एन आवर, समथिंग लाइक दैट, राइट? AWS क्लाउड इंजीनियर, मेरा मशवरा है कि जब Yeah. तुम
डेवऑप्स सिसऑप्स एआई मिला के पढ़ते हो, ये वाला जो ट्रैक है तुम्हारा, ठीक Yeah. है ना, nafe.com पे अगर तुम जाओ, जो तुम अभी कर रहे हो ना अभी, ठीक है ना, Hmm. और तुम इसमें एडवांस सर्टिफिकेट इन एआई ऑप्स, राइट, दिस इज द वन। Yeah. इसके अंदर तुम्हें वो सारे स्किल्स तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम वो सीख रहे होगे, कि जिसकी वजह से तुम जो है ना कहीं पर भी बैठकर काम कर सकते हो। नाउ ग्रांटेड कि तुम्हें अगर कनाडा में फॉरेन से जॉब चाहिए, तो तुम जॉब टाइप पे जाओ, और यहाँ अप्रेंटिस और इंटर्नशिप या जो भी है ना, जिस तरह से भी तुम्हें पकड़नी है, Hmm. यू कैन सी एंड यू कैन गो इन द इंडस्ट्री। और अगर तुम्हें रिमोट करना है तो जस्ट बोलो यार मुझे रिमोट दिखाओ ना खाली, ठीक है, तो विल जस्ट शो यू द रिमोट वंस, ठीक है। तो ये एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर या समथिंग लाइक दैट, या फुल स्टैक डेवलपर तो अभी नहीं, राइट, बट दैट्स वेयर यू कैन गो, राइट। जब तुम जॉब सर्च करो, कीप योर जॉब सर्च वाइड, ठीक है ना, अप्लाई इन यूएसए एंड इन कनाडा बोथ, ठीक है, बिकॉज तुम्हारे लिए यहाँ से रिमोट काम करना आसान है। नाउ यूएसए के अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगी। एट द एज ऑफ 19 इफ यू पास दिस, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ Hmm. ह्यूज, राइट। सो यू नीड टू हैव सम प्रेजेंस। सो मेरा मशवरा है, Yeah. डेवलप अ वेबसाइट, ठीक है ना, अच्छा. एक वेबसाइट बनाओ, ठीक है ना। सो Okay. abdulrafe.com या Abdul speaks about generative AI, Abdul AI, or something. I don't know. I mean, come up with a good name, register a domain, and develop a website, and start talking about your journey and everything there. ठीक है ना, start blogging, ठीक है ना। Okay. ब्लॉग्स लिखना भी अब आसान है, वो भी तुम्हारे लिए जनरेटिव एआई लिख देगा, ठीक है। सो यू कैन राइट, ठीक है ना, वो भी जॉब्स खत्म हो गई मार्केट में, अब सब ब्लॉग्स ऑटोमेटिकली लिखे जाते हैं। लेकिन अगर तुमने सही पढ़ लिया कर लिया, यू कैन गो मच मच फास्टर, बहुत आगे तक जा सकते हो, ठीक है ना। Hmm. सो ये मेरा मशवरा है। आई रियली वांट टू सी यू securing a job in the next 3 months. That is the Inshallah. goal. We are in September, October, November, December. So in January, Or this year. that Or is in the January. time that you should enter the market. Inshallah, Inshallah. that is the goal. Do you have any questions? I mean, I wanted to do this thing, Urdu, English, both, Yeah. लेकिन time नहीं है. We will do it later on with you. But मुझे बताओ, Inshallah. वो अलग टीम कर लेगी. But मुझे बताओ, तुम्हारा कोई सवाल है तो पूछो मुझसे. हाँ, मेरा सवाल था क्योंकि वैसे मेरी थिंकिंग ये थी कि पिछले 2 साल से यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट छोड़ने के बाद, ऑनलाइन स्विच करने के बाद मैं घर पे ही करता हूँ सब कुछ, सिवाय के 7 मंथ्स जब मैं स्टडी करता मैं लाइब्रेरी जा रहा था। तो मुझे जाना था कि मैं बाहर जाऊँ, एक्सपीरियंस करूँ, लोगों को सीखूँ, ऑफिस की पॉलिटिक्स जैसे होती है आप बता रहे हैं, ये कोई चीज़ें सीखूँ। और लोग मुझे बता रहे हैं कि आप एंट्री लेवल जॉब 90% टाइम बुरी होगी, आपको पसंद नहीं आएगी। सॉरी क्या होगा, लेकिन सॉरी क्या, एंट्री लोग लेवल क्या कह रहे हैं? जॉब्स एंट्री लेवल जॉब्स आपको 90% ऑफ द टाइम पसंद नहीं आएंगी, आपकी ऑफ द लाइकिंग नहीं होंगी। Yes, I mean, because entry में जो भी आता है, as I said, it's a very मतलब कि the culture is के the Islamic culture is के ना, उसमें आपको foster की जाता है, right? आप अगली जनरेशन को foster करते हैं, as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, a generation will come, ठीक है ना, that their salah will be, bigger than your salah, their sayam will be bigger than your sayam, their fasting, everything that they're doing is will be bigger than Sahaba. And the Sahaba said, why is that? They said, like, because in those days, practicing Islam will be very, very difficult, right? Right? So every generation needs to be fostered, right? So that they can move forward, right? The problem is कि West में बहुत different है, इसलिए हमारे कोर्स है, उसके अंदर EQ, emotional intelligence, in the light of the Seerah. This is a well-known fact. I don't have to share any research. You can do whatever you guys want to do. दुनिया में जब से सबसे जो हाईएस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो जो इवेल्युएट की सब, दैट इज अ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट। द सोशल साइंटिस्ट इसको बैठ के पढ़ते हैं, दे स्टडी कि भाई व्हाई इज दैट, आई मीन ही इज द नंबर वन पर्सन इन द वर्ल्ड एज वेल, द नंबर वन पर्सनालिटी, एंड इवन द जीसस कम्स एट नंबर 4, लाइक जिसको ये लोग, वो भी किसी क्रिश्चियन ने लिखी है, मुसलमान ने, माइकल हार्ट इज द गाय, राइट। माइकल हार्ट ने लिखा है, Michael Hart book on influential people, right? So the ranking of the most influential people, right? अगर तुम उसको देखोगे, you'll be able to see that. ठीक है, let me see. Let me open this if I can right now.
सो द पॉइंट इज के वो सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं. बैक इन 2000 आई थिंक ही रोट द बुक, राइट? उसने 2000 में बुक लिखी थी. सो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास ना मतलब कि वो तमाम चीजें हों जो आप करना चाहते हैं, राइट? तो बिकॉज ऑफ द वर्किंग रिमोटली, ठीक है, अब दुनिया में जो चीजें हैं वो बहुत डिफरेंट हो गई हैं. ऑफिस पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है और उसी को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर्स बनाया है. डोंट लर्न थिंग्स फ्रॉम ऑफिस पॉलिटिक्स, ठीक है? बहुत सारी तुम्हारी चीजें ऐसी हैं कि जो है ना बहुत इरेलीवेंट है. बिकॉज तुम देखोगे आगे जाकर कि दुनिया में बिकॉज ऑफ द कोविड-19 हर चीज जो है ना वो उस पर चलती है, रिमोटली चल रही है. मैं जरा इस चीज के ऊपर बात कर दूं. देखो, माइकल हार्ट ने ये बुक Yeah. लिखी थी, द रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल Yes. पर्सन इन हिस्ट्री, राइट? एज ही रोट, राइट? Yeah. और इसमें नंबर वन का उसने किसने लिखा है? जस्ट Muhammad रीड द नेम. Yeah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, right? Then Isaac Newton, then Jesus Christ, then Buddha, which is something that we sometimes claim like Zulkarnain or Zachariah, something I Yeah. can't remember, right? Confucius and whatnot, right? So अगर इसके ऊपर जाएं और हम इसकी बुक को देखें, these are the 100 people जिसने उसने नाम लिख के बताया है. और ये 2000 में इसने बुक लिखी थी, ठीक है? Mm. तो इसने इसमें सब कुछ बताया है. He has mentioned all the things. If I go back to the page, right, माइकल हार्ट की बात, आइजैक न्यूटन, तो इसने जो है ना मोहम्मद का यहाँ लिखा हुआ था, ये सारा मोहम्मद के ऊपर है, ठीक है ना? आई मीन ही इज द मोस्ट कंप्लीट लीडर, ठीक है, जिसके बारे में इसने लिखा है. सो द Mm. पॉइंट इज के लर्न फ्रॉम हिम. मैंने जिंदगी में जितना भी काम किया, आई ऑलवेज स्टिक टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम. सो इमोशनल इंटेलिजेंस तुमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है. वेस्ट में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, बहुत सारी चीजें खराब भी हैं, राइट? यू डोंट नीड टू लर्न ऑफिस पॉलिटिक्स. अगर तुम्हें काम आता है, ठीक है ना, एंड यू आर वर्किंग, तो तुम्हें किसी पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है. जिसको काम नहीं आता ना, वो पॉलिटिक्स करते हैं, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस, ठीक है? बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग. द ओनली थिंग दे नो इज के हराम कैसे कमाना है. देन दैट इज इफेक्टिवली दैट्स व्हाट दे डू, राइट? तुम्हें देयर इज नो नीड. अगर तुमने डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी के साथ तुमने सीएसएसपी पढ़ लिया, अब तुम डेवऑप्स पढ़ रहे हो, सिसऑप्स पढ़ रहे हो, एआई पढ़ो, आगे जाके तुम ऑफेंसिव और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ लेते हो, यू विल बी अ कंप्लीट इंजीनियर. An engineer, a director, a visionary, a leader in any company. All these multiple, an architect, all of these five things combined, you can go and you can do whatever they are asking you to do, you can do it. तुम सारे काम कर सकते हो, ठीक है? बट ऑब्वियसली बात है, ये 5 चीजें सारी एक साथ तो नहीं कर सकते ना. तो तुमने एक एक करके करना है. तो तुमने एक कर लिया अपना, ठीक है ना? अब तुम डेवऑप्स पढ़ रहे हो, सिसऑप्स पढ़ रहे हो, जॉब पकड़ो एआई के साथ ना, जॉब पकड़ लो, जॉब पकड़ लो, फिर ऑफेंसिव पढ़ लो, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ लो, बस, ठीक है ना? बाद में तुम बिग डेटा पढ़ लेना. बट द पॉइंट इज के ना, उसको पढ़ने के बाद ये स्किल्स तुम्हारे पास इतने हो जाएंगे, तुम कहीं पर भी जाकर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, आर्किटेक्चर में, जेनरेटिव एआई में, हर जगह जाके काम कर सकोगे. क्योंकि जो डिपार्टमेंट्स है ना वो मर्ज हो रहे हैं, ठीक है? दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग, यू Mm. नो. सो जैसे ये कायनात है, इट इज एक्सपेंडिंग एंड देन अ पॉइंट विल कम, इट विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग. सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ डॉट, इट विल कम बैक टू द डॉट अगेन, राइट? सो ये चीजें होंगी. सो द पॉइंट इज कि उसके अंदर बहुत अच्छा कोर्स तुम्हें दिया है. देर इज नो नीड फॉर यू टू गो एंड जॉन क्या कह रहा है, मैरी क्या कह रही है, वो कूलर टॉक वहां पर क्या हो रही है, गॉसिप्स क्या हो रहा है. Yeah. अगर वो करना है, तुम्हें देखना है ऑफिस का सीजन, तुम देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा. ठीक है, Yeah. सही है. My goal wasn't to learn office politics. मेरा गोल यही था कि बस बाहर निकलूं घर से बस. हाँ, तुम निकल सकते हो, निकल मूवमेंट सकते हो, बट द थिंग इज के जी. हाँ, तुम जा सकते हो. रिमोट मतलब जैसे वो लाइफस्टाइल मुझे लगता है मुझे at a young age मुझे सूट नहीं करता. Maybe when I have a family, sure. But Well, right now, you are classified as generation what? Generation X, Z. Z, right? Gen Z. So generation Z में हो तुम, ठीक है ना? Yeah. Generation Z तो घर की तरफ भाग रही कि मैं घर से काम करना. Yeah, I'm the opposite. मेरे राइट? पेरेंट्स ही urge कर रहे हैं आप थोड़ा घर से बाहर निकलो, दुनिया की हाँ. चीजें सीखो.
जैसे ठीक है, काम। आई मीन आई वुड से कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी वर्किंग फ्रॉम होम रिमोटली एंड व्हाट नॉट, Yeah. राइट। बट मैं ये कहूंगा कि तुम अप्लाई पूरे कनाडा में करो, अप्लाई Mm. एवरीवेयर, ठीक है ना। चाहे तुम्हें नोवा स्कोशिया में मिले, चाहे तुम्हें कहीं भी मिले, जस्ट गो, ठीक है ना। Yeah. गो देयर, वर्क देयर। बट अगर तुम्हें ये सारी चीजें आती हैं, यू विल बी एट दैट पोजिशन कि तुम्हें कोई हिला नहीं सकता अपनी जगह से, बिल्कुल। बिकॉज तुम्हें इफेक्टिवली बात करना आती होगी, राइट। सही है, अगर तुम्हें बात करना आती है देन यू कैन टैकल एनीथिंग। लेकिन अगर तुम्हें बात ही नहीं करना आती, और साथ में काम भी आना चाहिए, बातें और काम दोनों आना चाहिए। लोग तुम्हें मिलेंगे जिनको बातें आती हैं, काम नहीं आती, ठीक है ना। और कुछ लोग हैं जिनको काम आता है, बात करना नहीं आती। सो यू हैव टू डू बोथ, राइट। For sure. यू नो कलीम, उनको कहा जाता था खतीबुल अंबिया, शोएब अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, बिकॉज ही वाज अ वेरी एलोक्वेंट स्पीकर, right? So you need to learn all the properties of the messengers and the prophets, right? Mm. आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी तो वो है कि उनके पास हर चीज थी ना। From everyone, all the messengers, he was the best of all the messengers because he was the Mm. last and he was the best, right? So अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर है, लेकिन the point is कि तुम्हें उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना है। So if you do that, you will be at a very very secure spot. So तुम्हें बिग फोर कंसल्टिंग कंपनीज जो हैं, जैसे यहाँ पर जो कंपनीज हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, Yeah. ठीक है। इन कंपनीज में तुम जल्दी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। कंसल्टिंग कंपनीज इन कनाडा, सो इफ आई एम जस्ट गोइंग टू शो इट टू यू, राइट। तो अगर तुम यहाँ पर जाते हो, तो जो ना ग्रेजुएट राउट्स या राउट्स लेते हैं ना, सो दीज आर द Mm. कंपनीज यू कैन अप्लाई फॉर, राइट। ENY है, मतलब कि ये एक पूरी इनकी रैंकिंग है, टॉप 5 कंसल्टिंग कंपनीज जो है ना, Yeah. जिसमें डिलॉयट है, ENY है, KPMG, एसेंचुरा है, मैकेंजी है, बॉस्टन है, बेन एंड कंपनी, सब में मैंने काम किया, सबके साथ काम किया है, ये सब में काम किया है, राइट। Really. सो Mashallah. डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं सबके साथ काम कर चुका हूँ। दीज आर द कंपनीज जहां तुम अप्लाई कर सकते हो, Mm. ठीक है। बिकॉज यू हैव द पर्सनैलिटी, तुम्हारी पर्सनैलिटी है, तुम्हारे पास एक काम बिहेवियर है, तुम्हारी काम फेस है, ठीक है ना। एंड यू हैव द क्रेडेंशियल्स टू बैक इट अप। सो ओनली इफ यू कैन नाउ पास, ठीक है ना, दीज 3 एग्जाम्स, राइट। सो देखो, क्यूबरनेटीज विद, तो मैं दिखाता हूँ, Yeah. ठीक है ना। एंट्री लेवल पोजिशन, ठीक है ना, ऑफ Mm. क्यूबरनेटीज, ठीक है ना। एंट्री लेवल पोजिशन starts at what? Look at this salary. 124K. Yeah. This is a 6-figure salary, Mm. right? Entry level. बट सिर्फ क्यूबरनेटीज नहीं कि तुम क्यूबरनेटीज की सर्टिफिकेशन लेके आ गए, नो। तुमने वो Terraform. जो सारा जो कोर्स है ना, जो Yeah. Yeah. नाफे का जो पूरा कोर्स है ना, जो तुम्हें पूरा कोर्स है ना, उसमें सारा पढ़ना है। लिनक्स, ये तुम्हें थोड़ी सी पढ़नी है। रेड हैट एंटरप्राइज, एब्सोल्युटली यस। डॉकर्स डीप डाइव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लिंक्डइन का कोर्स तुम्हें पढ़ना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें तुमने करते हुए आना है। इफ यू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यस, देन, ठीक है ना, एंट्री लेवल। और ये क्यूबरनेटीज का जो एग्जाम है, अगर तुम Yeah. सर्च करोगे यार क्यूबरनेटीज का जो है ना, CCAD. सी कैट का एग्जाम है, लेंथ, आई थिंक इट्स 1 hour। It's a2 hour. 2 hour exam and you need to solve 17 questions, a passing score 66. 66। This is Easy. बच्चों का एग्जाम है, ठीक है ना। CKA हो गया, सी कैट हो गया, ये तुमने सारे एग्जाम्स निकालने हैं। एंड इफ यू पास दीज एग्जाम्स, क्योंकि तुम्हारे पास पाइथन ऑटोमेशन, एनसिबल, शेफ, पपेट, AWS का आर्किटेक्चर, तुम सब पे काम कर रहे हो ना, ठीक है ना। फिर तुम्हें PCI DSS का पूरा प्रोजेक्ट भी तुम कर रहे हो वहां पर, Inshallah. ठीक है ना। तुम्हें पूरा इस पूरी चीजों को PCI DSS में कैसे इंप्लीमेंट करना है, तुम्हें वो काम भी आता है। हु कैन स्टॉप यू? हु कैन स्टॉप यू? नो वन कैन, नो वन कैन, राइट। सो वो चीजें तुम्हारे लिए जरूरी है। तो यू कैन अप्लाई फॉर दीज कंपनीज। यहाँ पर तुम पे बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हो। ये तो भागते हैं, मैंने बताया ना, ये लोगों को ढूंढ Yeah. रहे हो। दे लुकिंग फॉर पीपल कि यार हमें कोई मिल जाए भाई, कोई मिल जाए, कोई आ जाए यार, कोई काम कर ले भाई, ठीक है ना। तो Yeah. ये तुम्हारे लिए एवरेज सैलरी है इन कनाडा, ठीक है। एज आई सेड, अगर तुम्हें ट्रैवल करना है, एक्सपीरियंस करना है, एवरेज कंसल्टिंग कंपनी में चले आओ। तुम्हें वो एक हफ्ता एक क्लाइंट पे, 2 हफ्ते एक क्लाइंट पे, दूसरे हफ्ते, अगले 2 हफ्ते किसी और क्लाइंट पे, तो तुम ट्रैवल भी करते रहोगे। यू Mm. हैव द कैनेडियन पासपोर्ट, राइट। Yeah. तो फिर तुम्हें वो हर जगह घुमाएंगे, तुम्हें करना है Yeah. कर। I've heard. Yeah.
I saw like videos on someone's experience at PwC. और वो बोल रहा बहुत up and down, up and down, up and down. Tough हाँ, job. दे विल सेंड यू एवरीवेयर। कहीं मतलब कि मुझे बहुत जगह भेजते थे, और मैंने सीमेंस में, पीडब्ल्यूसी, सब जगह काम किया है। और जैसे जैसे मैं ऊपर गया, मैं तो यंग एज पे मैं जो है ना, आई क्लाइम्ड अप द लैडर वेरी वेरी फास्ट, राइट। आई एम नाउ 43, बट my last position, I was working as a partner, right? Hmm. So $50,000 is the package that you get. As it all depends. जो फाइनेंस के पार्टनर्स होते हैं उनका अलग होता है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसका बंदे कम है तो उनके ज्यादा होता है, ठीक है ना। एवरीवन इज अ डिफरेंट वो, राइट। तो बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन काम बहुत ज्यादा होता है, और जो है True. ना, बंदे के सारे बाल सफेद हो जाते हैं, ठीक है। बिकॉज काम 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 काम, और जैसे जैसे तुम शादी करोगे, बच्चे होंगे, तो फिर देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, राइट। लेकिन मेरा मशवरा है कि तुमने अगर क्यूबरनेटीज के ये एक दो एग्जाम भी निकाल लिया, टेराफॉर्म का एक छोटा सा एग्जाम है 1 आवर का, वो निकाल लिया, Yeah. दैट्स इट। उसके बाद तुम्हें क्या करना चाहिए, सीसीएसपी का एग्जाम निकालो, आईएसएसएपी का Yes, yes. एग्जाम अगले 2-3 साल के बाद निकालना। देन जस्ट सिट डाउन, रिलैक्स, आरक्यूएफ का कर लोगे, तुम्हारे पास बैचलर्स की डिग्री की इक्वलेंसी आ जाएगी, ठीक है। फिर तुम यहाँ से बैठे बैठे मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हो, एलएसई से कर लो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, ठीक है। इफ यू आर अर्निंग, देखो तुम 6 फिगर सैलरी में अगले 3 महीने में लैंड कर सकते हो, Inshallah. इंशाल्लाह, ठीक है ना। तुम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के बाद बोलो इंशाल्लाह। मेहनत करने से ये एक बड़ा अजीब सा वो है मुसलमानों का, इंशाल्लाह, हर बात इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलते हैं। भाई पहले काम तो करो, फिर बोलो इंशाल्लाह, ठीक है। काम नहीं करेंगे, बोलेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा, भाई कैसे हो जाएगा भाई, ठीक है, ऐसे थोड़ी होगा। यू हैव टू वर्क हार्ड, काम मेहनत करनी, सब कुछ करना है, एंड देन आस्क अल्लाह, ओ अल्लाह हेल्प, देन अल्लाह विल पुट बरका इन इट, एंड देन इंशाल्लाह यू कैन रिसीव इट। Hmm. सो ये तुम्हारी पोजीशंस हैं, ठीक है ना। तो लेकिन उसको करने से पहले तुम्हें वो सारा खत्म करते हुए आना, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, इफ यू कैन So डू three, दैट। yes. So three exams you said was CCAD, CKA, and then Terraform. देयर आर 4। वेल, Four. सीकैट क्यूबरनेटिस के 4 हैं, यू डोंट नीड टू गो फॉर ऑल 4, जस्ट गो 1 or 2। एंड Wonderful. टेराफॉर्म इज 70 1 आवर का एग्जाम है, टेराफॉर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ठीक है, दैट्स इट। सो वो अगर तुमने कर लिया, बिकॉज एवरी कंपनी इज गोइंग टूवर्ड्स सर्वरलेस आर्किटेक्चर, राइट। Yeah. हर कोई इसके ऊपर काम कर रहा है, एंड इसमें पैसे बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त पैसे हैं, ठीक है। सो अगर तुमने मेहनत कर ली, निकल गए, देन तुम बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। सो दैट इज माई रिकमेंडेशन। मैं तुम्हें लिख के भी दे दूंगा उसके ऊपर, ठीक है ना, राइट इट डाउन एज वेल। बाकी तुम्हारे साथ जो है ना, फिर ये लाइव बाद में सेशन कर लेंगे, रिकॉर्डेड कर लेंगे, तुमसे सवालात पूछ लेंगे। Inshallah. जो तुम हो, कोई भी इमिग्रेंट आता है, इंडिया से आए, पाकिस्तान से आए, wherever those immigrants are coming from, Hmm. they have tremendous opportunity to be successful if they follow the pathway, because jobs are there. They are looking for people. They want to hire people. Even if you're on a student visa, you can still get the job because the jobs are there. It all depends on if you work hard enough. किसी ने मुझसे सुबह पूछा कि मेरे पास ना B1 B2 वीजा है, मैं यूएसए जाना चाह रहा हूँ, कौन सा कोर्स करूँ। मैंने कहा जाओ AIOps पढ़ लिया तो तुम्हें ग्रीन कार्ड का मतलब कि स्पॉन्सर मिल जाएगा, Hmm. ठीक है ना, तुम्हें मिल जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर लड़कों को मिल रहा है, जैसे वो अहमद अली खान है, वो आया यहाँ पर, ठीक है ना। कामरान था, ही वॉज ऑन स्टूडेंट वीजा, स्टूडेंट वीजा से उसको पीआर मिल गया, एम्प्लॉयर उसको जॉब मिल गई, उसने पीआर, वो जॉब ऑफर लेके फाइल कर दिया, पीआर हो गया उसका। अब मेरे ख्याल से अगले साल वो नेशनल हो जाएगा, ठीक है। Nice. तो इट ऑल डिपेंड्स, हर किसी की अपनी सक्सेस स्टोरी है। ही इज अर्निंग आई थिंक 85 समथिंग, 80,000 85,000। वो स्काडा में काम करता है एज अ स्काडा इंजीनियर। तुम डेवऑप्स से सॉफ्ट में, क्लाउड में बड़े आराम से घुस सकते हो। दिस CISSP will be a good conversation starter. People will look at your resume. There are two things. They will see CISSP, plus on top of it, it will mention in your objective, career objective, the first person in Canada to pass, ठीक है ना, his CISSP exam at the age of 19. Now there is a person in US who passed his exam, and I think he was 17 or something, but that was in States, ठीक है ना. But you are the first person in Canada. Alhamdulillah. I mean, you can take it to the bank and say, oh, I'm the first person in Canada. They might give you monopoly dollars, right? But it's a great statement.
because that shows that you are driven और तुम बहुत अच्छा काम कर सकते हो. ठीक है, इंशाल्लाह. अम्मी अबू हैं तुम्हारे बैठे हुए घर पे हैं? अम्मी तो पाकिस्तान है, वो लेकिन देख रही हैं अभी लाइव. अच्छा, लाइव और देख रही है. पापा भी देख रहे हैं, वो नीचे हाँ, हैं. पीछे सामने आ सकते हैं या जी बिल्कुल, अगर बुलाने की इजाज़त हो. हाँ जी, बुलाएं बुलाएं बुलाएं. एक दो सवाल मैं ले लेता हूँ, किसी के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं, अगर यहाँ पर लिख लें. अगर किसी का कोई सवाल है. जी, ये मूसा जमाल मोहम्मद, मूसा जमाल के वालिद साहब हैं, मोहम्मद जमाल. जी बोलिए. जी बस मूसा के हवाले से था कि डेवऑप्स उसने कर लिया था. आई थिंक वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, शायद वो हो नहीं पाया. जी जी, मैं तो बहुत मसरूफ हूँ क्योंकि मेरी मीटिंग्स हैं बहुत सारी, फिर यूनिवर्सिटी का भी काम चल रहा है. आपका बेटा तो माशाल्लाह शायद हो सकता है वो ये रिकॉर्ड तोड़ दे. इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है, अल्लाह खैर करे. हाँ, वो बहुत ही इज वेरी ड्रिवन. मैंने उसको देखा है, उसके फेस को देखा है मैंने. ठीक है ना, वो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त बच्चा है, बड़ा ज़हीन है. अब्दुल राफी का हो सकता या है कि वो रिकॉर्ड तोड़ दे. अल्लाह करे जी. हाँ, बस records are there to be broken, right? Records are there to be broken. बहुत अच्छी हम्म, बात है, मुझे बहुत खुशी होती है. ठीक है, कि हम अपनी जनरेशन को आगे बढ़ते हुए देखें. It's a great thing. You may have a competitor in the making. Abdul Rafi, इंशाल्लाह there's a इंशाल्लाह. student of mine, Musa Jamal. How old is he? कितना 16 का 17 कितने साल का है? 15.5 का है, अभी 16 का होना है उसने. Oh, he's 15 and a half. He just completed his DevOps and Really, diploma in माशाल्लाह. cloud cybersecurity. Yes, I mean, if you meet him, you will be surprised. He doesn't look like 15 and a half or 16. हम्म, Yeah, वो लगता नहीं है. I mean, he's very driven, mashallah. माशाल्लाह. इंशाल्लाह So, हाँ, तो inshallah you're there. You're almost there. You're very close by. तुम्हारी जर्नी मुकम्मल होने वाली है. I mean, it's just the start of the journey. It's not done, Abdul Rafi, because तुम्हें भी काम करना है. Where is your father? he said he's in a meeting. He's in a meeting. Okay, he's doing Yes, his own meeting. he's working from home as well. Oh, he's working from home. Okay. Yeah, Okay, inshallah. So that is my recommendation to you all. ठीक है ना? yeah. Abdul I had, Rafi. yeah, I have some questions in the chat, but I had a question for you first. I still had a question about the mentioning of CSP, even though I haven't completed the entire certification. Like, because in the code of ethics, it says clearly that you cannot mention anywhere which exam you passed if you're an associate of ISC2, and if you get found out, if you get caught, you'll be banned for life. Oh, I'm going to ask them. Not even I'm going to suspended. ask them. Yes. I'm going to ask them what is the status of that. ठीक है Yeah. ना? I have the links. I have the connections. So I have been their examiner as well. ठीक है? So मैं इनसे पूछ लूंगा कि भाई what is the status of all of these things. The associate, I mean, in your letter, read the letter and read the fine print. There are always ways of highlighting the things, right? Okay? The fact that you were able to pass the exam is a great thing. You can't use the full CISSP certification name in front of yourself. Like you can't say Abdul Rafi CISSP. You can't do that. You can say Abdul Rafi Associate of IC Square, right? Yeah, I can do Someone that. say, what does that mean? Say, I just passed my CISSP exam. There you go, right? So, but there are ways of putting it, right? I want to get that thing in writing from them, saying like, one of our students, he did that, and we want to mention that on his resume and whatnot, etc., etc. But no one can stop you from writing a blog, write about your journey, how you did this, how you did that, and that is going to help you out, right? So when you're talking about a blog, are you talking about like a writing post or like an audio or like a podcast? No. Like write an article. Like, Okay. blogs are just like blogs. Write one page or article saying your journey, how you started all of these things, right? And what are you doing nowadays? Whatever you're learning, try to document. जो भी तुम कर रहे हो ना, try to document all of these things. So अगर तुम इस तरह करोगे, then it's going to be much more easier for you. You'll be much more successful, inshallah. So can I use a different website, like a blogging website, or do I have to make my own like blogging website? You can buy yourself a WordPress domain. Because if I want to harbor presence or like views, right, it would make more sense for me to be on another platform than to make. No. तुम्हें एक blog चाहिए. You just need something on your own name, right? Come up with a good name, So like Rafe, speaks about security. Like it has to be a short name, छोटा सा नाम हो, ठीक है?
और वो तुम जेनरेटिव एआई से पूछो कि भाई मुझे एक ब्लॉग स्टार्ट करना है, उसकी वेबसाइट का नाम क्या हो, कैसा हो, ये मेरी yes. स्टोरी है, और मुझे बताओ कि व्हाट शुड आई डू ना। तो वो तुम्हें उसके हिसाब से जेनरेटिव एआई, क्रिएटिविटी उसकी बड़ी अच्छी है, वो तुम्हें बताएगा, Yeah. राइट। वो तुम्हें अच्छी तरह समझा देगा, बता देगा, ठीक है ना। Inamullah, sir, I completed RCS with 60% last year. Now I'm a student of CCSD. I want to go abroad, like UK. What roadmap should I follow? ये सब मैं बता चुका हूँ पहले भी. Anyway, मैं इसको बता देता हूँ. So तुम्हारे लिए मशवरा यही है कि तुम ना अपना उसके लिए जाओ, go for the exams. उसमें पूरी प्रिपरेशन सब कुछ करवाई है, सब कुछ दिया हुआ है. तुम इसको आराम से निकाल सकोगे इंशाल्लाह, and that will take you further. Because security जो है ना, it is changing. Security is not about data centers anymore. Security is all about cloud and serverless technologies, right? So and about generative AI. तो अगर तुमने उसमें काम किया तो तुम बहुत अच्छे तरीके से कामयाब होकर निकल सकते हो, ठीक है? Here's my dad, if you have time for it. Yes, of course, of course. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था आपकी शायद दाढ़ी थी, या आपकी दाढ़ी थी नहीं, मुझे याद नहीं। हमारी मुलाकात नहीं हुई है, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं फिर फोन पे शायद बात हुई, आई फोन कांट। पे बात हुई है। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो, आपके बेटे ने जी जी। एग्जाम पास की है। इट्स अ बिग अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जाम, बड़ा मुश्किल है। और जैसे मैं इसको दिखा रहा था, बता रहा था कि दिस एग्जाम इज इक्वलेंट टू RQF लेवल 7, विच मींस के यूके में अगर ये कहीं भी अप्लाई करता है, दिस इज कंपेरेबल टू अ मास्टर्स डिग्री, राइट। हम्म, तो ये मास्टर्स डिग्री में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। अगर इसने अच्छी तरह पढ़ लिया और काम कर लिया थोड़ा सा, जो इसको थोड़ा सा करना है, तो स्टार्टिंग जो क्वालिफिकेशन, जो स्टार्टिंग जो ये सैलरी उठा सकता है, दैट गोज इन द रेंज ऑफ बेसिकली 6 फिगर्स, लाइक 120 to 124,000, 30,000 ये उठा सकता है, इसने अगर एक दो एग्जाम्स और निकाल लिए, राइट। तो आप उसकी थोड़ी सी हेल्प करें, इसको थोड़ा जी असिस्ट जरूर करें, बिकॉज अगले 3 to 6 मंथ्स में ये अच्छी जॉब पे जाके बैठ जाएगा। इंशाल्लाह। मैंने इसको समझाया है कि इसको किस किस कंपनीज में अप्लाई करना है, और किस किस जगह पे जाना है, बिकॉज यहाँ पर इसके पास बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं, डिलॉयट, EY, KPMG, एसेंचर एंड सब में काम करने की, बिकॉज ये कंपनीज जो है ना पूरा पूरा सपोर्ट करती हैं, ठीक है। बीइंग ही इज द फर्स्ट पर्सन इन कनाडा एट द एज ऑफ 19 टू पास द एग्जाम, डू यू नो दिस? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है? आपके थ्रू मालूम हुआ है। इसने आपको इसमें बताया नहीं? नहीं, इसी ने बताया था, मतलब आपने इसको बताया कि ही इज द यंगेस्ट वन। सो जी, मैं IC स्क्वाड से मैंने बात की है, आई वांट दिस थिंग इन राइटिंग फ्रॉम देम, ताकि अच्छा। हम इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर सकें, ठीक है। बिकॉज दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम एंड फॉर द मुस्लिम्स एट लार्ज, मतलब कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है यहाँ पर, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके पास इंशाल्लाह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बड़ा समझदार बच्चा है, सीरियस बच्चा है, आप उसका ख्याल करें और अल्लाह ताला इसको और कामयाबी अता फरमाए इंशाल्लाह। आमीन आमीन। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी भी बहुत एफर्ट्स हैं आपके इंस्टीट्यूट की, जिस तरह आप लोगों ने गाइड किया इसको। शुरू में तो टफ टाइम इंशाल्लाह, था हमारे लिए किसी पे लेकिन अल्लाह पाक का एहसान है कि इसने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कर लिया। नहीं, इट्स अ डिफिकल्ट स्टेप, या पेरेंट्स लेते हैं और वो करते हैं, मतलब कि ना, सो वी ऑलवेज टेल देम कि भाई अगर आप उसको थोड़ा सा लीवे दें तो बच्चा हम्म। बहुत आगे जा सकता है, आप उसको मौका तो देना पूरा, जी ठीक है, जी। इंशाल्लाह। वो इस चलें, पे बहुत ट्रस्ट बहुत था, इस शुक्रिया। वजह से जो है ना इसको फ्री हैंड दे दिया था। मैंने कहा चलो ठीक है, ये आप टाइम इसको है। दें, आप इसको लेट हिम ग्रो, ये या, समझदार है, जब ये इतनी डेडिकेशन से ये पास कर सकता है, बाकी सारे एग्जाम बहुत जी आसान, जरूर जरूर। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इसने जो चीजें पढ़नी है पढ़ ले, तो फिर ये फुल टाइम जॉब्स के लिए जनवरी फरवरी से अप्लाई करता है, मार्केट में उतरता है। हम्म तो इसको इसको जो मैं इसका रेज्यूमे बना रहा हूँ, ये अगर अभी से मार्केट में सिर्फ फ्लोट भी करेगा ना, तो हम्म। ये ही विल स्टार्ट सीइंग, इसको इंटरव्यू कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। लेकिन वो बात वही है कि ना, इसको थोड़ा सा और पढ़ने दें, और ये थोड़ा सा हमारी कोर टीम के साथ बैठ के काम करे, ठीक है ना। मैं इसको कोर टीम जो हमारी है शमसी, उसके साथ लगा रहा हूँ, ताकि सर्विलेंस पे थोड़ा काम करे, सीखे, तो ये हम्म। बहुत आगे तक जा सकता है। और ये इसके लिए बाय द टाइम दैट ये अपनी 20th बर्थडे पे पहुंचता है, 125 to 150 उठाना इसके लिए मसला नहीं है, इंशाल्लाह। ठीक है ना, पर एनम। मैंने इसको यही कहा है कि जैसे आप गाइड कर रहे हैं उसी तरह, जैसे मैंने कहा फैसल भाई आपको गाइड करते हैं, आप उसी तरह उसी को फॉलो करो।
हाँ जाहिर है आपको एक्सपीरियंस है ज़्यादा इसी फील्ड में नहीं नहीं ज़्यादा। इंशाल्लाह आई मीन ही विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। बाकी आप इसको बस ग्रो करने की पूरा बोलते हैं, इनकरेज नहीं, करें हमारी तरफ से इंशाल्लाह इसको कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी, हर तरह हाँ। से सपोर्ट है क्योंकि हमारी। इसका जो आपका जो सबसे बड़ा मसला था, जो आपको डर था कि यार डिग्री का क्या होगा, तो डिग्री तो उसके पास जो है ना वो RQF लेवल 6 के एग्जाम देने से बैचलर्स आ जाएगा, मास्टर्स इसने पहले ही कर लिया है। जी जब भी जी। अपना एक्सपीरियंस क्लॉक इन कर लेगा तो उसको वो भी मिल जाएगी। बस हमारा ये था कि कंटिन्यू एजुकेशन करता रहे, उसके साथ साथ सर्टिफिकेशन करता करता रहेगा, रहे, तो एक करता रहेगा। प्लस पॉइंट हो हाँ जाता। मतलब इफ यू हैव कैनेडियन एजुकेशन बैचलर डिग्री प्लस सर्टिफिकेशन, देखें, हेल्प आप होती है। कनाडा की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो यूके की LSE से और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से मुकाबला नहीं कर सकती। जी ठीक है, जी। तो ये अगर इसकी जॉब हो जाए अगले हम्म, 3-4 महीने में, और ये यहाँ से बैठ के LSE से पढ़ लेता है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का तो आपने नाम सुना है, वो जी हाँ जी रिमोट हाँ। डिग्री करवाते हैं। ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भी अब शुरू करवा रहे हैं। तो ये यहाँ से बैठ के वहाँ पढ़ सकता है, वहाँ की फीस भी अफोर्ड कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो वहाँ से ऐसे बैठे बैठे मिल जाएगी इसको। जी जी। और उनका मास्टर्स की नाम भी है। तो आपके खानदान में पहला बच्चा होगा जो 20-21 साल की उम्र में बाहर से पढ़ भी चुका होगा, मतलब कि बिल्कुल मास्टर्स भी खत्म कर चुका होगा। आपको और क्या चाहिए, और 6 फिगर में सेल बिल्कुल। पैसे भी कमा रहा है, बस आपको क्या चाहिए फिर? आप इसके लिए शादी का बंदोबस्त करें बस, फिर इंशाल्लाह। वो अल्लाह खुद करा देगा इनसे टाइम के साथ साथ। हाँ इंशाल्लाह, मतलब कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यार आपको मेहनत करना तो होगी, पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल मेहनत ठीक तो है, होगा आप तो। इसके लिए देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू प्रिजर्व हिज ईमान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है इंशाल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर आपका टाइम। ठीक है, जज़ाकल्लाह आपकी तमाम हेल्प का, सपोर्ट का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, एनीवे आपको एनी, ठीक है, बिल्कुल दुआ में याद बिल्कुल। रखिएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल आप भी। ठीक है जी, अब्दुल हाफिज़। इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल राफे, जज़ाकल्लाह खैर, आप अपने वालिद साहब को लेकर आए। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम बात करते हैं, मेहनत करो, और बस अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमाए। ठीक है, इंशाल्लाह, ओके, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।